So now what we would do is, Dibjyoti, that we will pick this up, Control A, Control C, Control N, Control V. Okay. So now I'm going to JSON to SQL 6, right? And then date to consider kiya beta, ye kiya, ye kiya, ye kiya. Now I go down to SQL to consider and then I collect this. So I pick up this company. Now what I do is I declare two things here. Declare. Now just type it the way I am typing it. At opening balance, which is decimal 18,5. Declare running balance decimal 18,5 है ना बेटा, यहाँ तक पहुँच गए. अब opening balance basically means that I need to pick up the opening balance from this thing. So based on the company name and the ledger name, we need to pick up the opening balance for the ledger account. ये तो एक ही बनेगा. यहां तक तुम्हें समझ में आया बेटा कि नहीं आया? तो इधर बेटा क्या करेंगे हम, एक फंक्शन बनाएंगे and this function would be a scalar valued function. Am I correct? Yes or no? Yes, sir. So I will create a new function. So I say here native scalar function here. So now create function fn underscore get opening balance. ठीक है ना. इसमें इनपुट क्या जा रहा है, एट कंपनी नेम विच इज वेयर कैर 255 and then another one which is going is ledger name which is where can 255. देवज्योति तुमने ये टाइप किया? Yes, sir. मैं कर रहा हूँ sir. अब I might be wrong. I mean हो सकता है कि मैंने syntax गलत लिखा हो. So that I can work it out. But I should know how logically how to approach it. Correct? यहाँ तक पहुँच गए. Right? Where can? As begin as returns decimal 18,5 ऐसे कुछ होता है इसमें. राइट. क्रिएट फंक्शन दिस. अब तुम्हें अगर क्वेश्चन है कि बॉस ये फंक्शन हाउ टू राइट दिस फंक्शन, you simply go here because even I forget the syntax at times. I have not used a lot of functions. So I go here and I say modify. So returns this. This is the party name where can returns decimal begin. Okay, so I go here. I say returns this. ठीक है, इसमें ये करना पड़ेगा क्या, dbo dot. Now I say begin. Declare at opening balance as decimal 18,
कॉमा 5. ये हुआ? यस or no? 18, 18, Set at opening balance equal to select opening balance from ODS underscore ledger details tally where ledger ODS underscore ledger details tally में क्या है? At ledger name is equal to, अब देखो इसमें ODS पे आ जाओ, कौन कौन सी फील्ड्स हैं? Right? Are you understanding from where I'm coming? yes sir. Name and is this clear, beta? Yes or no? Yes or no? रिटर्न, इसमें रिटर्न आता था ना, एट ओपनिंग बैलेंस एंड. ये समझ में आया? ये एरर क्या दे रहा है? ठीक है बेटा? तो ये फंक्शन क्रिएट हो गया. तुमने फंक्शन क्रिएट किया? यस or no? Yes sir, yes sir. तुमने yes, sir. स्केलर हो फंक्शन गया, क्रिएट sir. किया, बिकॉज सी व्हाट विल हैपन इज दिस इज अ स्केलर फंक्शन. Yes sir. इज दिस क्लियर? Hmm. Declare Yeah. at closing balance is decimal 18,5. ये होगा? Balance. समझ में आया बेटा? So what we would do here is set at closing balance. ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस, राइट? जरा इसको बहुत ध्यान से देखो. इज इक्वल टू डीबीओ डॉट कौन सा फंक्शन? ओपन बैलेंस, राइट? पहले कौन सा आया? एट कंपनी नेम, Hmm. and then the second is at ledger name. ये बेटा समझ में आया तुम्हें कि नहीं आया? Yes sir. I'll add something to it. बहुत ध्यान से देखो, तुम्हें यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इज इट क्लियर अप टिल हियर? Yes sir. So I have created a function and I'm now going to use that particular function to get my opening balance. And then I'm going to convert this, whatever is the output.
So whatever is the output of this, I'm converting it into decimal 18 comma 5. Although I don't need to. Think through it. Yes. Hereafter, so here the running sum is a total of the opening balance plus the the closing sum. Is a total of the opening balance, correct, plus the running sum of the balance sheet entry. बहुत ध्यान से देखो इसको. So Devjyoti, I will go very slow here. Yes, sir. I will go very, very slow. Okay. Now the second is that I would need to calculate the running sum. Right. And I'll tell you why I rejected that order. See, basically the thing is, they were asking for cost of goods sold. Cost of goods sold is an on-fly calculation. तो वो मेरे लिए बहुत risky हो गया. Because that I was not willing to take it in the revenue accounts. Right? Yes, sir. Correct. So अभी तक बेटा तुम्हें यहाँ तक, are you clear on how to make a scalar function with an input value? Now I need to find out where we are looking at the running sum. So for running sum, now just analyze it very carefully, and you can also tell me if you want to do it. I have got a company name, I have got a ledger name, and I will have a date as a parameter, right? So how will I calculate the running sum? Think about it. Okay. So again I will go here and I will say create function dbo dot running underscore sum. Sir, फिर से function बना रहे हैं क्यों sir? Because one is an opening balance and one is a running sum. नहीं है समझ में? नहीं तो फिर से फंक्शन बनाने का मतलब नहीं समझो सर, क्योंकि मैंने इससे पहले जो रनिंग सम निकाले हैं वो तो फंक्शन में नहीं निकाले हैं सर. मैं फंक्शन से निकाल लूंगा ना. ओके. Because I want to use it in the set statement. अच्छा रुको. At company name where 255. आप इसको ट्राई करके देखो ना. At ledger name where 255. At date ये हो गया. Yes or no? Yes sir.
it returns decimal 18,5 as begin. Yes or no? यस सर। यही था ना, रिटर्न एज बिगिन, यही था ना, एज आ रहा था, रिटर्न्स दिस। अच्छा, इसमें एज नहीं आता क्या? ये सब छोटी मोटी चीजें, इसको एक बार कनेक्ट करना है। डिक्लेयर एट रनिंग underscore sum as a decimal 18,5 set at running underscore sum equal ये हुआ। select sum of the credit amount minus debit underscore amount, ऐसे होगा ना। एक सेकेंड, select star from ODS underscore ledger details tally, ODS underscore यहां तक पहुंच गया ना। सेल अमाउंट डेबिट माइनस सम ऑफ सेल amount underscore credit। यही है ना, एज नेट अंडरस्कोर अमाउंट। बस तुम करते जाओ, अभी इसको देखो समझ जाओगे। फ्रॉम ओडीएस अंडरस्कोर voucher ledger details where at company name is equal to, बताओ company name, कंपनी जो कंपनी and at ledger name is equal to, नेम बताओ नेम सर। शाबाश। एंड अब यहां पे आ जाएगा कास्ट एट डेट अंडरस्कोर मैक्स एज डेट is less than equal to, is less than equal to or is greater than equal to, is greater than equal to cast what, document date। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब समझ में आया कि रीजन क्या है, why we created a function। यस सर। तो फिर सर ये जो फंक्शन बनाया है इसको तो फिर ऊपर में लेना पड़ेगा सर। हाँ, फंक्शन को ऊपर लेंगे ना, पर तुम्हें फंक्शन समझ में आया कि क्या रीजन है उसका? रिटर्न्स एट रनिंग अंडरस्कोर सम एंड। ये तुमने किया इसको, अब इसको लेकर के एग्जीक्यूट करो। इनकरेक्ट सिंटैक्स नहीं है दिस, तो क्या है? I missed it. Okay. रिटर्न होता है क्या? रिटर्न होता है। Then it says sum.
So I say cast this as cast this as decimal 18,5. Cast this as decimal 18,5. ऐसे चलेगा? चलेगा शायद. Let's see. From where to the company भी कंट्रीब्यूट होना चाहिए. लेजर रिजल्ट नेम कैश इमीडिएट कंट्री नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. अब चलेगा. सर सेल्स क्रेडिट अमाउंट को इसको सर इसको ठीक कीजिए तो अमाउंट को. अब ठीक हो जाएगा. But you understand the logic of this? ये अब हो गया सर. तुम्हें समझ में आया बेटा कि नहीं आया? So, Yes, sir. because I did not have this code ready, and the client was asking that, look, you give it to me immediately. So that is a client call. They did not want to give an edge, and the person was being nasty. So I said, नहीं बस ये risky बहुत ज़्यादा है. The person is also a bit, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है बंदा. Because आप इतना ज़्यादा टफ पूछ रहे हो, and so this, तो आपको मैं अभी यहाँ तक मैं छोड़ दूंगा. So plus dbo dot some running some subpaths. Because Devjyoti, you'll have to understand, there are a lot of people. Oh, I made it as function. I made it as running sum. Okay, chalo. So I say at company name. Correct, beta? At ledger name, comma, enter. Now this date max is at min underscore date. तो हर तारीख के लिए वो निकल के आएगा. So you will find all kinds of experiences in life. Some people will, come and they'll, put you down. मतलब उनको ये लगेगा कि अच्छा. Sometimes people come and say, okay, fine, as if they own the guy. Right? ये तुम्हें समझ आया? Yes, sir. ठीक है ना? So this goes here. Set close and bind. Then what we will do is for each of the ledger names and each of the dates, we will insert the closing balance. नहीं आया समझ में? Can you think through it? By my heart, on each ledger and on each company are closed. So at the end of each fiscal month, I'm storing the ledger's closing balance and I'm just going to simply put it there. नहीं आया बेटा समझ में तुम्हें? See, the problem is, why I had to do this is because this running sum we have cracked. Right? ये जो रनिंग सम है बेटा, ये क्रैक हो जाता है. यहां पे हमारा कोड चल रहा है. We are able to solve it. But this becomes a problem. ये वाला तुमने सही बनाया. If you look at it carefully, if I look at this average bank balance, it works. Is this clear? Yes, sir. But
If there is a ledger which has an opening balance and no transaction, then this fails. That day, that's what he was trying to say, na, कि भैया अगर even if I group it by date, so he was not saying a filter parameter. He was not saying कि भाई इस तारीख से इस तारीख के बीच में करो. वो ये कह रहा था, boss, I'm going to group it by date. On each given date, even if the bank balance is 0, I needed to show it. मान लो 10 है opening balance and there is no transaction. On each date, I need you to show that. So I said I do not have it in the code. So they got very upset. You understanding it? तो कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो मेरे पास कोड तैयार नहीं था. करेक्ट. तो ये सब बहुत है. तो दे हैव प्रॉब्ली गॉन विद सम अदर पार्टी, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट वी विल कीप दिस कोड रेडी. अभी तुम इस कोड को एक मिनट समझ लोगे. शैल आई गिव यू द एंटायर कोड, देन आई विल डू द सेकंड क्वेश्चन टुमारो. आई विल नॉट गो फास्ट ऑन दिस. ओके सर. Correct. So then beta, I close this right now. It's on YouTube.